इंडिया द्वारा क्रेडिट पॉलिसी की जाहेरात करवामां आवी रही है। सीधाजी के जे प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संबोधन करवामां आवी रह्युं छे। रिजर्व बेंके मोटी राहत आपी छे, तेना गवर्नर बदलाया छे, एना माटे आशाओ घणी वधारे हती अने मोटी राहत। तो रेपो रेट में 0.25% घटाडो करवामां आव्यो छे। 2023 थी आ घटाडानी अपेक्षाओ हती, परंतु अत्यार सुधी स्थिर राखवामां आव्यो हतो रेपो रेट। परंतु हवे आरबीआई द्वारा मोटी राहत आपवामां आवी छे। रिजर्व बेंके रेपो रेट में 0.25% एटले के 25 बेसिस पॉइंटनो घटाडो कर्यो छे, जेना कारणे जे लोन छे, तमाम लोन जे छे ते सस्ती थई जशे। जेणे होम लोन लीधी हशे तो तेने हफ्तामां पण राहत थशे अने क्यांक 25 बेसिस पॉइंटनो घटाडो करवामां आव्यो छे। रेपो रेट में 0.25% घटाडो करवामां आव्यो छे। आरबीआईए एक मोटी राहत आपी छे। रेपो रेट जे 6.50% હતો તે હવે ઘટીને 6.25% થઈ ગયો છે. The MPC also noted that though growth is expected to recover from the low of Q2 of 2024-25 this year, it is much below that of last year. Last year, you are all aware, it was 8.2%. This growth inflation dynamics opens up policy space for the MPC to support growth, while remaining focused on aligning inflation with the target. And accordingly, the MPC decided to reduce the policy rate, by 25 basis points to 6.25%. At the same time, the MPC felt that excessive volatility in global financial markets and continued uncertainties about global trade policies, coupled with adverse weather events, pose risks to the growth and inflation outlook. This calls for the MPC to remain watchful. Accordingly, it decided to continue with a neutral stance. This will provide MPC with the flexibility to respond to evolving macroeconomic environment. With this, now I come to the assessment of growth and inflation. First of all, growth. As per the first advanced estimates, real GDP growth for the current year is estimated at 6.4%. The numbers were released by MOSPI recently. This is a softer expansion after a robust 8.2% growth last year. Going forward, economic activity is expected to improve in the coming year. तो आरबीआई द्वारा एक मोटो निर्णय। नवा गवर्नर आवतानी साथे तेमणे 5 वर्ष बाद 2020 में रेपो रेट घट्यो हतो, तेमणे आ महत्वनो निर्णय कर्यो छे। असीमभाई मेहता, चार्टर्ड एकाउंटન્ટ, अमारी साथे जोड़ाई गया छे। असीमभाई नमस्कार, संदेश न्यूज में आपनुं स्वागत। पहला सामान्य बजेट में 12 लाख सुधीनी आवकवेरामां राहत अने हवे रेपो रेट में घटाडो करवामां आव्यो। आ निर्णयने आप कई रीते जोई रह्या छो? गुड मॉर्निंग। सौप्रथम तो 2020 पछी ज्यारे रिजर्व बेंकनी पॉलिसी स्टेन्समां फर्स्ट टाइम जो आपने फेरफार देखायो छे बहु आवकारदायक छे, कारण के लगभग आम समझो तो लगभग 5 वर्ष पछी आपने रेट कट जोवा मळी रह्यो छे। अने एनी पाछळनुं कारण आपणे जाणीए छीए के घणा बधा वखतथी जे रिजर्व बेंकनी कम्फर्ट लेवल इन्फ्लेशन हती एना करता इन्फ्लेशन उपर हतुं अने ए कारणसर रिजर्व बेंके बहु ज पोतानुं कड़क वलण देखाड्युं हतुं। आ वखतनी पॉलिसीमां चोक्कस अपेक्षा हती के रिजर्व बेंक रेट कट करशे અને આઈ થિંક બધાની એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે રેટ કટ ઘટાડ્યો છે। પણ હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે હજી કોમેન્ટ્રીમાં આપણે જાણવું પડશે કે ઇન્ફ્લેશનનું ટાર્ગેટ શું છે અને ગ્રોથનું ટાર્ગેટ શું છે। આ બે વસ્તુ આવનારા સમય માટે બહુ જ મહત્વના રહેશે। પણ ઇન્ડિકેશન ચોક્કસ એવું છે કે ફર્ધર રેટ કટની પોસિબિલિટી ચોક્કસ છે, કારણ કે ડિસેમ્બરના જે ફિગર આવ્યા હતા એ આપણે ઇન્ફ્લેશન 4.94 જે ખાસ કરીને ફૂડ ઇન્ફ્લેશનમાં ઘટાડો હતો એના હિસાબે એવું લાગી રહ્યું હતું કે આ વખતે રેટ કટ ચોક્કસ આવશે અને માર્કેટ ચોક્કસ એને આવકારશે। बिल्कुल आभार असीमभाई, संदेश न्यूज साथे जोड़वा बदल।